lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
जी हाँ फ्रेंड, मैंने वायरिंग कर चुकी है। अब मैं आपको सिंपली एक बार बताता हूँ। मैंने तो आपको बताते बताते वायरिंग की है, लेकिन फिर भी एक वायरिंग करने के बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। जैसा कि ये आपका स्टार्टर है जो पूरी तरह से सारा एलिमेंट असेंबल हो चुका है। जी हाँ, अंदर की तरफ सारी वायरिंग भी हो चुकी है। अब मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। इसमें होते हैं 5 टर्मिनल। आपने जितने भी तरह के स्टार्टर देखे होंगे सब में 5 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं आपके सप्लाई के लिए। जी हाँ, फेज और न्यूट्रल, जो आप अपने स्विच बोर्ड से देते हैं। जी हाँ, जो आप अपने स्विच बोर्ड के माध्यम से देते हैं वो फेज और न्यूट्रल। पहला टर्मिनल फेज है। जी हाँ, पहला फेज है, दूसरा न्यूट्रल है। उसके बाद आते हैं मोटर के 3 वायर लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा आर वाई बी में, यानी कि मोटर के 3 वायर लगते हैं आर वाई बी में। जी हाँ, अब आइए यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 है। फेज है, न्यूट्रल है, आर यानी कि रनिंग वाला है, ये वाई है यानी कि स्टार्टिंग के 2 कैपेसिटर के स्टार्टिंग वाला वायर इसमें लगे हुए हैं। कॉमन करने के बाद दो मतलब कैपेसिटर के जो 2 वायर जो कॉमन किया है वो इसमें लगा हुआ है वाई में, और बी में आपका न्यूट्रल जाएगा क्योंकि ये कॉमन है। देखिए जैसा आपका कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, यहाँ पे यदि न्यूट्रल है तो यहाँ का न्यूट्रल यहाँ पे आके चला जाएगा बी में। जैसे कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा, यहाँ का फेज आके यहाँ पे आएगा, यहाँ का चला जाएगा आर में। और यहाँ वाला टर्मिनल जो है दोनों कैपेसिटर का एक एक टर्मिनल को कॉमन करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि ये स्टार्टिंग ये क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जी हाँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक टर्मिनल है। उसके बाद आपने सिंपली समझा था फेज का सप्लाई जो है यहाँ पे देने के बाद सबसे पहले एमसीबी लगाया। एमसीबी के बाद क्या है, सीरीज में आर्मीटर लगेगा, यहाँ से एक टर्मिनल निकाला। जी हाँ, और फिर आर्मीटर को सीरीज में लगाते हुए फिर यहाँ से डायरेक्टली ले गया एक टर्मिनल आपका सप्लाई के लिए ले गया कंट्रोल वायरिंग का। जी हाँ, यहाँ पे दे रहा है। फिर यहाँ से जैसे मैं इस बटन को पुश करूंगा, यहाँ से फिर एक आउटपुट वायर निकलेगा जो कि जाएगा आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर में। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इसे प्रेस करके रखूंगा तब तक आपका सर्किट में स्टार्टिंग कैपेसिटर बना रहेगा। इसीलिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन हमेशा ग्रीन स्विच बटन यानी कि स्टार्ट पुश बटन से होता है। जी हाँ, और एक वायर जो है वो सिंपली ऑन ऑफ ये भी है, तो ये सिंपली एक सीरीज में लगा हुआ है इसके। जी हाँ, तो इस सीरीज में लगा हुआ है। उसके बाद फिर इसका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली चला जाएगा आपके एनर्जाइज कॉइल पे, क्योंकि रेड पुश बटन ही तो ऑन ऑफ करता है ना, तो इसीलिए इसका जो आउटपुट वायर है वो जाता है एनर्जाइज कॉइल के लिए। ये हर एक स्टार्टर में आपका यही कनेक्शन होगा। जी हाँ, किसी में डिफरेंट नहीं होता है। इतना होने के बाद आपका ये वोल्ट मीटर को सिंपली क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल चाहिए। तो फेज देखिए, यहाँ से फेज लूपिंग करके यहाँ पे स्विच के थ्रू, जी हाँ, ये स्विच को ऑन करूंगा तो फेज को बाईपास करेगा। तो यहाँ पे स्विच के थ्रू जाके यहाँ पे फेज दिया, और ये वाला सप्लाई जो आप देख पा रहे हैं येलो वाला, जी हाँ, ये न्यूट्रल है जो कि आपका लूपिंग किया हुआ यहाँ का न्यूट्रल से बस। और ये आपका इंडिकेटर यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया, और फेज यहीं से जो निकल रहा है वो फेज मिल गया। आई थिंक आपको पूरा स्ट्रक्चर का वायरिंग समझ में आया होगा। हालांकि हालांकि मैं जो अभी हूँ वो इस पर्पज से नहीं बनाया हूँ कि अभी आपको अच्छे से पूरा समझ में आए। जी हाँ, मैं सर्किट डायग्राम के साथ भी मैं समझाऊंगा, लेकिन बेसिकली क्या है कि मेरे पास स्टार्टर था तो मैं सोचा कि नॉर्मल एक वीडियो बनाता हूँ और वीडियो को पोस्ट करता हूँ। जी हाँ, लेकिन मैं पूरी सर्किट डायग्राम के साथ मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। आई थिंक अभी भी आपको कुछ कुछ चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब मैंने स्टार्टर को कनेक्ट कर चुका हूँ, मैं लाइन के सप्लाई के साथ जोड़ चुका हूँ। अब आइए चेक करता हूँ ऑन करके। पहले मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं एमसीबी ऑन करूँगा। एमसीबी ऑन हो गया। ये जैसा कि बताया था, ये वोल्ट मीटर के सीरीज में स्विच लगता है। प्रेस करता हूँ। जी हाँ, आप जैसा कि देख सकते हैं तकरीबन वोल्टेज यहाँ 180-85 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब मैं ग्रीन बटन प्रेस करके मोटर को स्टार्ट करता देखता हूँ। हाँ जी हाँ, ये स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग करंट ले रहा है तकरीबन 14 से 15 एम्पियर ले रहा है, और ये नॉर्मल करंट है इसका 7 एम्पियर नॉर्मल करंट है। 1 HP का मोटर है। और बाकी मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि पानी चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि वहाँ मोटर ऑन करने के बाद पानी यहाँ पे आ रहा है। जी हाँ, ये डायरेक्ट सप्लाई दिया हुआ है, ऊपर टंकी में भी है। आइए आपको ऊपर टंकी में दिखाते हैं। और यहाँ सप्लाई आ रहा है, यानी कि मेरा स्टार्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सब कुछ सही रहा। अब मैं मोटर को ऑफ कर दे रहा हूँ। जी हाँ, आप रेड पुश बटन को प्रेस कीजिए, देखिए बंद हो गया। आप एमसीबी डाउन कर दीजिए, ये कम्प्लीटली बंद हो चुका है। जी हाँ, थैंक यू। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने स्टार्टर का काम पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप लोग भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।